Hello everyone, you are welcome to my YouTube channel Study Maths with Asif. So friends, before starting the video, I request you press the like button and share it with your friends and other students. Also, if you are new to this channel, kindly subscribe the channel and hit the bell icon for the latest videos. So friends, before starting this video, I made a video on payoff matrix. So if you are interested to see that video, I will give you its link in the I button or cards, also in the description box. You can check out that video also, right? That will also help you. If you watch that video, right, then you better understand this opportunity loss, because opportunity loss is based on payoff matrix. So how to obtain the payoff matrix, that I explained right in my previous video. So you can find the thumbnail which looks like this of that video. So you can check my channel and you will get it. Now let's talk about the opportunity loss here. So opportunity loss means it's a kind of virtual loss, the loss which is not occurred, right, but it is occurred virtually. For example, right, I just tell you about it. This is the payoff matrix. For example, if you see here, the right retailer has stocked right 4 units, 0 1 2 3 4 in this way, and see if the demand is 4, for example. In short, I'm telling you, then I will explain it better. Suppose he stocked 1 unit, demand is 4, and the profit for 1 unit is 20. So if he had right stocked 3 more units, so he would have been made profit of 60 rupees more here. So that is the virtual loss he occurred, because he had only 1 unit, so he made no loss, rather he made the profit. But in case he stocked right 3 more units here, so right demand was 4, so he would have made right 60 rupees more. That is what is the right virtual loss. Now come to the point how to calculate. I will explain it now. So when we calculate the opportunity loss, right, we use this technique. We find this maximum payoff right from the table, then we take the payoff out of it, and we do it corresponding to the event or nature of state. Okay, nature of state or event wise, we follow this method to find the opportunity loss or regret, right? So you see, when how to calculate this opportunity loss. So we face this opportunity loss when we have the imperfect information. Suppose retailer, for example, had the perfect information of the demand, so he would have been right stocked in that proportion. So opportunity loss will not be there in that case. ठीक है ना? तो लेकिन परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तब अपॉर्चुनिटी लॉस होता है. ओके, अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल में बताया था. तो ये 2 मेथड हैं जिसको हम फॉलो करते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस के लिए. ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला. सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसमें मैक्सिमम पे ऑफ, राइट, इवेंट वाइज, राइट. ये हमें देखना पड़ेगा कि आपको जो टेबल दी हुई है उसमें ये कॉलम वाइज दिया हुआ है या रो वाइज दिया हुआ है, राइट. स्टेट ऑफ नेचर और इवेंट्स दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है, राइट, वी हैव टू डिटेक्ट ऑल द पे ऑफ्स. हाउ टू डिटेक्ट इवेंट वाइज, दैट इज रिटन हियर, right. So in this way we follow the steps, this state opportunity loss. Now I take this example to discuss this opportunity loss. So please go through the example. This is the same example which I took in case of payoff matrix. So I made the payoff matrix. Here I will take the ready-made payoff matrix to talk about opportunity loss. I hope you understand. So I read this question again. A retailer has स्पेस फॉर 4 यूनिट्स. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट. ठीक है, तो इसमें मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ आपको कि उसको कॉस्ट पड़ती है पर यूनिट की 30 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज़, तो उसको प्रॉफिट हो जाता है 20 रुपीज़ का. और वो पेरिशेबल आइटम है, ही कैन स्टॉक नॉट मोर देन 1 वीक. सो दीज आर द कंडीशंस इन द एग्जाम्पल. जस्ट रीड इट और टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन स्टडी इट, राइट. आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा. तो पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये हम पहले कर चुके हैं, राइट. तो मैं इसको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कैसे बनाते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम राइट मार्किंग द हाईएस्ट वैल्यू, राइट, इवेंट वाइज. सो दीज आर द इवेंट विच आई हैव रिटन कोरस्पॉन्डिंग टू कॉलम्स. तो मैंने यहाँ मार्क कर लिया, दिस इज द मैक्सिमम इन दिस इवेंट, this is this maximum, it is also maximum payoff, it is maximum payoff, and here in the first column this is the
maximum payoff. So I mean explain a bit. On the left I'm writing the act or alternative or strategies, right, जो कि रिटेलर यहाँ से राइट स्टॉक करेगा, इस बेस्ड ऑन दिस रिटेलर विल टेक द डिसीजन, राइट. ये डिमांड है, कितनी डिमांड है, उसके पास सिर्फ मैक्सिमम 4 यूनिट्स ही कैन स्टॉक. तो हो सकता है उसके पास 0 स्टॉक हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4, बट नॉट मोर देन 4. तो हमने डिमांड भी उसके हिसाब से देख ली यहाँ पर, ठीक है. तो इस तरह से हम पे ऑफ मैट्रिक्स बना लेंगे. अगर आपको ये मैट्रिक्स समझना है तो मैं आपको लिंक इसका आई बटन पे दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज फॉर विच वी आर हियर टू मेक द अपॉर्चुनिटी लॉस ट्रिवियल. तो अब हम क्या करेंगे, वी फाइंड द मैक्सिमम पे ऑफ. इन दिस केस इट इज़ 80. कॉलम बाय चेक करेंगे तो वाकई जो पे ऑफ्स हैं, दीज आर द पे ऑफ्स, हम उसको माइनस कर देंगे 80 में. मीन्स आई विल डू दिस 80 minus 0 विल गिव यू 80, and this 80 minus 20 it gives us 40, and this 80 minus 40 it gives us right what 40, and 80 minus 60 it gives us 20, and 80 minus 80, so this is 0. So the opportunity loss associated with the maximum payoff is 0, right, and the minimum payoff is this is the right opportunity loss. So in this way you can calculate it is the maximum payoff, now minus other payoffs and write corresponding them here, right. So in this way you write here, here and here. Now see, we obtain this matrix. This is called opportunity loss matrix. So when you do this you will get it. मैं इसको इसके साइड में रख देता हूँ so that you can tally them side by side. See, this is payoff matrix and it is opportunity loss matrix. So in this way we can draw this. मैं थोड़ा और zoom कर लेता हूँ so that you can appreciate it. So I hope you understand this video and like the video. If you like the video, please press the like button, right. Share this video with your friends and other students. So in the next video I will discuss more topics, right. So stay connected with the channel, right. I'll meet you again in the next video. By then, bye bye, take care, thank you.